Hello students, welcome to Unit 2 of AWP. Welcome to second lecture of Unit 2. In last session, we discussed about the syllabus. Two practical questions. Then two types of scripting. One is a client base and server side. Overview and some features. How to create our first web form. Three types of designing view, source view and split view. What are the steps? We already discussed about all these main section. Then we created one web form. In this session, we are going to discuss code behind the class. So in a code behind the class, when it is created, when you create your first web form, default .aspx file is created, right? And this file also create its code behind the page file. What is the extension of this code behind the file? Default.asps.c#. Code behind the file means it is your actual C# file where you have to write your code. Okay. So when you click double click on in your design view, it will generate your code behind the file. कोड बिहाइंड फाइल जनरेट होने के बाद ये कोडिंग ऑटोमेटिक रहती है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू राइट योर कोड स्टार्ट फ्रॉम हियर. And this code behind the file created one partial class. Okay. Then some event handler is also generated in code behind file. We will see the code behind file. Here are three important points. First we will discuss this. This code behind file. This code behind file inherits from the page. Code behind file inherits from the page. Second point, it contains partial class. It contains partial class. Third point, when it is executed first time, it created its instance. It created its instance. And fourth point is that when it's created its instance, it create XHTML file, XHTML file, and it is sent to the client. Okay. And point number 5 is when instance is created, that time means what? This file can be accessible by multiple users. Okay, means once the instance has been created, this site or this page can be accessed by multiple users. Okay, so we will see one by one. Point number 1. The code behind file inherits from the page model. It inherited from the page model, which defines the general functionality of the web page. What it defines? Code behind the page model और ये पेज से inherit होता है, which defines the general functionality of the web page. Web page का एक general functionality define होता है. The code behind the file, point number 2, the code behind the file contains the partial class, as we already discussed. It contains the partial class. Next, the first time the web page is requested, this class is compiled and instance is created. जब भी ये पेज के लिए फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट होता है, मीन्स फर्स्ट टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड, देन दिस क्लास इज
compiled. Which class? This partial class is compiled and one instance is created. एक instance, वो class का एक instance create होता है and this instance represented our whole page. वो instance ही एक page को represents करता है. Okay. Next is it creates XHTML that is sent to the client. क्या होता है? एक XHTML create होके वो client को send किया जाता है. An instance of the web page has been created. Once the instance of the web page has been created, multiple clients can use to access it. Okay, there is a no recompilation is necessary. Is that clear? So here are the 5 important points. One is it is inherited from the page model, which defines the general functionality of the web page. Second is it contains the partial class. Next, class है तो वो instance create करेगा. It is created the instance and when instance is created, it is sent sorry, XHTML and send it to the client. It is sent it to the client, and once the instance is created, multiple user or multiple clients can use to access this page simultaneously. I hope you understand the advantage of the page code behind the page model. Another point is that it is GUI or event driven. Event driven यानी क्या होता है? Event means what? जब भी वेब फॉर्म में कोई भी कंट्रोल यूज किया जाता है, कंट्रोल मीन्स व्हाट? टेक्स्ट बॉक्स इज वन कंट्रोल. टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन, ड्रॉप डाउन बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑल आर द .NET कंट्रोल. ओके, तो ये जो भी कंट्रोल्स है, एक्चुअल कोड फॉर दिस लेबल, फॉर दिस कंट्रोल, जो कोड है इंटरैक्शन करने के लिए जो कोड लिखा जाता है, जो मेथड में वो कोड लिखा जाता है, दिस मेथड इज नोन एज द इवेंट हैंडलर. इवेंट हैंडलर. So when the user interact with the GUI component, the event is drives the program. Event is drives the program to perform this particular task. Okay. So event handler is what? It is the method that perform the task in a response to an event. Event handler क्या है? एक method है which perform a task, particular task to perform the it is the one method to perform the task in a response to an event. This is known as the event handler. In the next slide एडिंग द इवेंट हैंडलर. अभी इवेंट हैंडलर तो आपको समझ में आ गया कि इवेंट हैंडलर एक्चुअली है क्या. इट इज अ वन मेथड. ओके, एंड वो मेथड में हम लोगों को कोड क्या लिखना है? द कोड इज इंटरैक्शन ऑफ योर वेब कंट्रोल. ओके, और जो भी वेब कंट्रोल का एक्चुअल कोड है वो हमें वो इवेंट हैंडलर में लिखना है. सो वी हैव टू ऐड दिस इवेंट हैंडलर. सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मेथड. वंस वी कैन डू इट मैन्युअली, and second by double clicking. So first, as we can see, this event handler react to the web control. Event handler किससे react होता है? It react to the web control. Two easy way to add an event handler is, first is type it manually. Means manually type करने में क्या होगा? You have to add the subroutine directly to the page class in your C# code file, and you have to type it manually. आपको ये सब मेथड जो है वो टाइप करना पड़ेगा मैन्युअली. उसका appropriate पैरामीटर देना है, उसका नेम्स एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट इट केयरफुली इन अ मैनुअल मेथड. बट वेरी पॉपुलर मेथड और important method is double click, which is we use. Double click a control in a design view. Double click a control in a design. Double click a control in a design view
there is a one label, यहाँ लिखा हुआ है name. Enter your name. In front of this is the text box. Okay, and here is one button, submit. Okay, this is the one button. ये 3 controls है. Okay, when we write something name here, click on the submit. So this name should be submit onto the database. Okay, और कुछ तो भी name यहाँ access होना चाहिए. Name, it should be allowed to write the name to the user. Okay, तो क्या होगा, इसके लिए जो भी करना, जो भी कोड आपको लिखना है, ये बटन के लिए आपको जो भी कोड लिखना है, so you just double click on it. आपको क्या करना है, यहाँ सिर्फ डबल क्लिक करना है. when you double click on this button, it will get an event handler for that button. Okay, बटन के लिए event handler generate हो जाएगा in the next slide, and it is look like that. Okay, it is look like that. अगर मैन्युअली लिखा है, मैन्युअली लिखना है तो आपको ये सब मैन्युअली लिखना पड़ेगा. प्रोटेक्टेड, वॉइड, बटन वन क्लिक, ऑब्जेक्ट सेंडर, इवेंट ARGS, दिस इज ऑल द आर्गुमेंट. ओके, बट अगर आप बटन पर डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा. आपको सिर्फ उसमें ये डबल कोटेशन में, सॉरी, ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस में आपको यहाँ आपका कोड लिखना है. Okay, so this is the second way, and second way is more simpler. By double click on the control, it will generate its respective event handler. Next is, this is the HTML code for this event handler. Button ID, button 1, run at server, text box 1, button clear. Okay, this is all the ID. Text box 1 means what? It is button 1, run at server, text button. Here is the ID. You can give the name, text OK का name दे सकते हो, आप submit भी लिख सकते हो. Okay, for example, if you have created a one text box control, अगर आपको एक text box control create करना है, which is named as a text box 1. text box 1 क्या है, उसका ID है. ID is very important. ID is the name of that control. So it is name, that is text box 1. You can set a text by using the following line. जब भी आपको टेक्स्ट बॉक्स वो बटन पर डबल क्लिक करोगे, एट दैट टाइम यू विल गेट दिस इवेंट हैंडलर. आपको ये इवेंट हैंडलर जनरेट हो जाएगा. प्रोटेक्टेड, वॉइड, बटन 1 क्लिक, ऑब्जेक्ट सेंटर, इवेंट ARGS, एंड दिस इज योर एक्चुअल कोड. टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, हियर इज अ सम सैंपल टेक्स्ट. ये आपने कोड लिखा है. ओके, so जब भी आप बटन पर क्लिक करोगे, at that time you will get one message. Here is some sample text, and this message will appear in the text box. Okay, so this is called as the event handler. I hope you understand this event handler very well. Event handler is basically what? It is a one method. You have to write a code inside that event handler, and this code is, by using this code, your actual control is going to perform some task. This is enough for today's lecture.